Very good afternoon to you boys and girls. It's been cloudy since the morning and I hope it will rain, or a bit of my mind says it should not because I want to have a game in the evening. Anyways, the weather is nice and let's get on with our work. I have started with a beautiful lesson called friction, and I discussed about static friction, limiting friction, kinetic friction, and the law of friction. A quick revision. Frictional force will come into play only when we apply an external force. If we do not apply an external force, there is no frictional force. But limiting friction is a data. Remember, limiting friction is a data. It is a fixed thing because it depends on the normal reaction. अब तो सारा lecture हो गया ना? The limiting friction depends on normal reaction, which means that if we know the normal reaction, we know the limiting friction. F is equal to mu into R. Mu is given to you. जो कैलकुलेशन आएगी उसका मतलब क्या होगा? Suppose the limiting friction between two surfaces is 20 newtons. It's my favorite. Which will be given by mu into R. Now, you do not apply a force. The limiting friction is still 20 newtons, but there will be no friction force that comes into play. You apply a force of 5 newtons, the body will not move. Limiting friction also means that this is the minimum amount of force that must be applied so that the body begins to move. Right? If you apply a force of 12 newtons, frictional force which comes into play is 12 newton, and this force is the static friction. It means static friction is always equal to the force that you apply, and that force must be less than the limiting friction. अच्छा लगा ना? Once you apply a force equal to the limiting friction, the body will just begin to move and it will keep on moving with uniform speed. If you want to accelerate it, you have to apply a force greater than it. It is a different thing that once the body begins to move, the friction force reduces. And then you go on increasing the applied force, the force of friction will not increase. This force is called the kinetic friction. The law of limiting friction suggests that before we start doing the numericals, आज आपको थोड़ा सा काम दे भी सकता हूँ, but इसकी थ्योरी खत्म कर लूँ पहले सारे. Let me talk about the angle of friction. Angle of friction. Angle of friction जो है, it is a beautiful thing. देखो, ये मेरे पास है ब्लॉक बड़ा सरफेस के ऊपर mg, अभी मत बनाना साथ साथ, और ये इसका रिएक्शन R इक्वल टू mg. ये आपने फोर्स अप्लाई की P, सारी फ्रिक्शन रिवाइज हो जाएगी. Limiting friction है, and the coefficient of friction between the block and the surface is mu. This is given to us. उससे मैंने limiting friction निकाल ली. In every problem on friction, we will first of all calculate the limiting friction. The moment you apply a force less than the limiting friction, एक frictional force यहाँ पे equal and opposite. You go on increasing this force, this static friction will also go on increasing. A stage comes when the body is on the verge of motion. A stage comes when the body is on the verge of motion. It would mean that at this time this pull, this force is equal to the force of limiting friction. Limiting friction वहाँ हमेशा act नहीं करती, सिर्फ तो करती है when the body is on the verge of motion. And assuming limiting and kinetic to be the same, तो फिर ये increase. If the applied force is less than the limiting friction is a data,
now at this instant the body will begin to move, right? And if you apply this force and if you increase this force will remain the same. काइनेटिक बन जाएगी, ये कोई बात नहीं. लिमिटिंग और काइनेटिक यूजुअली बराबर मानते हैं. ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है. आई कैन मूव अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, आर नहीं लिख रहा मैं वहां पे, अच्छा, but this is the resultant of the limiting friction and the normal reaction. The angle that it makes with the normal reaction is called the angle of friction. P is an applied force which is just enough to start motion of the body. FMS is the limiting friction. Coming into play. Now, the angle of friction is the angle that the resultant of limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. यहां से देख के ना अपने आप लैंग्वेज बन जाती है. जैसे कि जस्ट अ मिनट ना, ये एंगल है. The angle that the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Clearly, tangent theta is FMS over R. FMS over R क्या होता है? Mu s. Therefore, the coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction. ठीक है जी. Now, ये डायग्राम बने रहने देता हूं. I would require it. I hope you have copied down this or are copying it. Right? अगली चीज मैंने डिस्कस करनी, चलो आप कर लो, कॉपी लिख सकते हो. I hope you would have completed it. Let me just explain one thing to you. If I go on increasing this applied force, पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के कम होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी.
स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फिक्स्ड रहते हैं 20 न्यूटन, म्यू इंटू आर, जरूरी नहीं 20, म्यू इंटू आर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. The moment this applied force is equal to the limiting friction, the body is just on the verge of motion, just on the verge of motion. And if I increase this applied force further to a value more than the limiting friction, the limiting friction then will not change. Kinetic बन जाएगी, वो अलग बात है. Kinetic और limiting में कम ही फर्क है. एक अगली चीज डिस्कस करने लगा हूं. What I am again trying to tell you is that if the applied force is less than the limiting friction, then any increase in this applied force will not change the limiting friction. Static friction will keep on increasing. Angle of repose. एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में पड़ा, दो कंपोनेंट बनाए इसके, और ये रहा जी नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन. This is the component mg, sin theta. अभी मत लिखना, ये थीटा हो, this is mg cos theta, this angle is theta. अभी चेंज करना मैंने. Let me start theta from a very small value. My favorite example, ये हॉरिजॉन्टल पड़ा. एक और बात देखो, इंक्लाइन प्लेन पे रिएक्शन चेंज हो गई, इट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बदल गई. दोनों सरफेसेस चाहे सेम है पर लिमिटिंग फ्रिक्शन बदल गई. लिमिटिंग फ्रिक्शन अब हो गई म्यू mg cos थीटा. इसकी कोई वैल्यू होगी, लेट्स से 20 न्यूटन ही ले लो चाहिए. ओके, ये इंक्लाइन प्लेन है. I hope you can see the incline. This angle is theta, और वहां पे mg cos theta और mg sin theta. I keep on increasing this incline plane. Right? This angle of the inclined plane, which it makes with the horizontal, for which a body placed on it just begins to slide, is called the angle of repose. दोबारा दिखाता हूं. I go on increasing the angle of the inclined plane. Go on increasing the angle of the inclined plane. This angle is called the angle of repose. That angle of the inclined plane for which a body placed on it just begins to slide. अब हो क्या है? वो क्या है? यहां पे है जी the force of friction. The force of friction. पर एक बात ध्यान से सुन लो मेरे. In this case, as I go on increasing P, limiting friction से कम है P, but I go on increasing it. तो limiting friction को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्ट नहीं कर रही है. फिर से बात सुन लो, ये बात ना बड़ी डाइसी है. लिमिटिंग फ्रिक्शन जहां मैंने शो की हुई है, बिकॉज एट दिस इंस्टेंट दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन इफ द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पे है जी FMS इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. ये फिक्स्ड है. 20 न्यूटन है सपोज करो, वहां की बात करते हैं. मैंने फोर्स अप्लाई की 5 न्यूटन, तो यहां लिमिटिंग एक्ट करेगी, वहां स्टैटिक एक्ट करेगी 5 न्यूटन की. मैंने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दी 12 न्यूटन. लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी भी 20 है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 12. इट फॉल्स इनटू प्लेस. आई नो, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा. 18 न्यूटन कर दी मैंने, लिमिटिंग अभी भी 20 है.
और स्टैटिक है 18, मैंने ये 20 कर दी, अब यहां पे ये लिमिटिंग एक्ट करने लग गई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे लेट मी कंसीडर दैट केस जब इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक बॉडी रखी थी और बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है कितनी है? अभी कुछ मत लिखना, उस वक्त एफएमएस इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एमजी कॉस थीटा। से ये कितनी है? से ये 30 न्यूटन, ठीक है? या चलो आप बोलोगे पहले 20 लीजिए, कम होनी चाहिए, ये 15 न्यूटन। ये एक डेटा है, नीचे कौन लेके आ रहा है बॉडी को? mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा की वैल्यू 15 न्यूटन, जो इस वक्त की लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उससे कम है, सपोज करो 5 न्यूटन है, तो हाउ मच फ्रिक्शन फोर्स विल कम इनटू प्ले? 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन के 20 न्यूटन। I repeat, the limiting friction at this instant is mu mg cos theta से ये वैल्यू निकाल के आ गया 15 न्यूटन। इस इंस्टेंट पे जो mg sin theta नीचे एक्ट कर रहा है वो है 5 न्यूटन, तो static friction of 5 newtons will come into play and balance it. A static frictions of 5 newton will come into play and balance it. ठीक है जी? अब मैंने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन का एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। एज आई इंक्रीज इट, mg sin थीटा इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना बोला था? 5 न्यूटन, अब कितना हो गया? 8 न्यूटन। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि थीटा इंक्रीज हो गया, कॉस थीटा कम हो गया। बी केयरफुल, वहां पे नहीं कुछ हुआ था। I am considering that much force which is less than the limiting friction. यहां पे ये limiting friction की वैल्यू सपोज करो 20 न्यूटन है। I will have to increase this force to at least 20 newtons. Suppose to applied force was 0. Limiting friction was still 20 newton. Applied force is 5 newton. Limiting is still 20. Static is 5. Applied force is 12 newtons. Limiting friction is still 20. Applied is 5. Applied is 12, sorry, and static friction would also be 12. दोबारा बोल देता हूं। Applied force 0, limiting friction 20, static 0. Applied force 5 newtons, limiting friction is still 20, static friction 5. Applied force 12 newtons, limiting friction तो 20, क्योंकि mu into r, r change नहीं हो रहा ना। On increasing p, r does not change. And if P is less than FMS, then static friction will be equal to P and the body will not move. Come here now, come here. This is that angle which is less than the angle of repose. Right? Body अभी slide नीचे नहीं कर रही। यहाँ पे applied external force का काम mg sin theta play कर रहा है। At this instant, theta is such, मैंने limiting friction निकाला mu r, r यहाँ पे mg नहीं है, mg cos थीटा, वो आ गया 15 न्यूटन। mg sin थीटा था 5 न्यूटन, तो mg sin थीटा कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, बॉडी नहीं चलेगी। और यहाँ पे कौन सी फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? स्टैटिक। लिमिटिंग तो एक डेटा है भी इतनी हो सकती है। मैंने एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन थोड़ा बढ़ा दिया, तो साइन थीटा बढ़ गया 5 न्यूटन से 8 न्यूटन हो गया। पर इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 नहीं है। This does not, mg sin theta does not have to be increased till, it has to be increased till the limiting friction at that instant. Because as I raise the angle of the inclined plane, mg sin theta goes on increasing and mu mg cos theta goes on decreasing. The most important thing to understand here is that as I raise the angle of the inclined plane, the limiting friction goes on decreasing. कोई तो ऐसा एंगल आएगा for which mg sin theta is just equal to the limiting friction at that point.
वो एंगल एंगल ऑफ रिपोज है और उस एंगल को मैं डिनोट करता हूं फाई से। जो इंक्रीज कर करके आ गया। इस वक्त यहां पे एफएमएस है, इस वक्त यहां पे एफएमएस है। Angle of repose. It is that angle of the inclined plane. For which a body placed on it just begins to slide. If phi is the angle of repose, R is equal to mg cos phi and fms is mg sin phi. Clearly, fms over r is tangent phi, or mu s is equal to tangent phi. The coefficient of friction is equal to the tangent of angle of repose. No need. अभी दोबारा आता हूं उस बात पर। We know mu s is equal to tan theta, where theta is angle of friction. ठीक है? And mu s is equal to tangent phi, where phi is a angle of repose. Therefore, tangent theta is equal to tangent phi, or theta is equal to phi. मतलब angle of friction is numerically equal to the angle of repose, though both of them cannot be represented on the same diagram. Angle of friction horizontal के केस में और angle of repose inclined plane के केस में. Angle of friction is the angle between the limiting friction and the angle which is the resultant of the limiting friction and the normal reaction mixed with a normal reaction. Angle of repose is that angle of the inclined plane for which a body placed on it just begins to slide. What I am trying to tell you again and again is that as I go on increasing this inclined plane, mg sin theta goes on increasing. दोबारा करते हैं, ठीक है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सपोज करो आपकी 30 न्यूटन्स एक बड़े छोटे एंगल के लिए. As I go on increasing the angle of the inclined plane, ना, this limiting friction goes on decreasing. mg sin theta will go on increasing. सपोज करो mg sin theta पहले था 5 न्यूटन, थीटा बहुत कम था, mg sin theta 5 न्यूटन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन थी. एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, mg sin theta की वैल्यू होगी 10 न्यूटन. अब 30 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग.
शायद वो 25 होगी. सो करते 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 एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो सपोज करो 30 है, mg sin थीटा 5 है. नहीं स्लाइड करें कोई ये एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, mg sin थीटा goes on increasing and mu mg cos थीटा goes on decreasing. ये एंगल बन गया जी एंगल ऑफ रिपोज. We'll do more about this in numerical problem please. Let's finish our theoretical part. आज खत्म कर दूंगा और 23rd तक हमने सिर्फ एप्लीकेशन ही करनी है. उसके बीच में आपके एक असाइनमेंट हो जाएगी, टेस्ट हो जाएंगे, बहुत कंसेप्ट्स हैं, बेतहाशा. जितने एमएलएम के थे उतने उससे बेटर. Work done against friction. ये आपके पास mg normal reaction. Mu is the coefficient of friction between the two surfaces. It is given. Static, kinetic बराबर मानते हैं. सबसे पहले बात होती है limiting friction between the two surfaces is FMS is equal to mu s into r or FMS is equal to mu s into m into g. इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी. This also means that we will have to apply a minimum force of this much to start the body. Let P be this force. तो यहाँ पे कितनी एक्ट कर गई जी? FMS. P is equal to FMS. We will say that the body will move, but with uniform speed. इस फोर्स ने बॉडी को यहां तक ले आया. दिस इज S. P of force that is just enough to move the body. Work done against friction. W. We are going to use case 1 था. Body moving on a horizontal surface. Frictional force into distance. Work done with force into distance. आप बोलोगे सर ये तो अप्लाइड फोर्स into distance होने चाहिए. यार मैंने कहा P बिल्कुल अप्लाइड फोर्स के बराबर है, पर एक नोट में एक चीज डालूंगा. Remember work done against friction is frictional force into distance. Mu mg into S.
this work done is always lost as heat or light or both. Sound also. Heat or light or sound. You know. That's it. Etc. अब ये कहानी क्या है? एक नोट डालो, बड़ी अच्छी समझ आएगी बात। सपोज करो applied forces 20 newtons, surface is frictionless. बड़ा अच्छा समझ आएगा एग्जाम्पल से, ठीक है? डिस्टेंस मूव्ड इज 10 मीटर्स, वर्क डन कितना हो गया? F into S, ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है? अप्लाइड फोर्स है 200 जूल्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है, चल रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है? यूजफुल है, लॉस्ट नहीं है। Now, if surface is rough, बंदे के दिमाग में आता है सर वर्क डन होता है अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, आपने फ्रिक्शन फोर्स डिस्टेंस कर दिया, क्यों कर दिया? अभी बता। अप्लाइड फोर्स F20 newtons, limiting friction 5 newtons. Body will move ना, नेट वर्क डन कितना होगा? आप बोलोगे सर नेट फोर्स होगी 20 minus 5 and distance traveled is let's say 10 meters into 10. This is 15 into 10 equal to 115 joules. 50 जूल कहाँ गए? Clearly 200 minus 150 equal to 50 joules are lost in doing work against friction. ये मेरे को कोई पूछे नेट वर्क डन कितना है, यार अगर therefore work done against friction is 50 joules, which is lost in doing work against friction. Work done against friction can directly be given by frictional force into distance. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी? फ्रिक्शनल फोर्स थी 5 न्यूटन। डिस्टेंस कितना था? 10 meters. 5 into 10 is equal to 50 joules. I hope clear होगी बात। Here if the applied force was maybe more than the, यहाँ हमने इसलिए रख लिया कि वो जितनी वर्क डन सारा का सारा खत्म हो गया। Had the applied force over here there have been 100 newtons and the frictional force was 5 newtons, still the work done against friction would have been 50 joules only. That is why the work done against friction only can directly be given as the product of the frictional force into the distance, whatever might be the external applied force. The external applied force has to be greater than, at the most equal to the limiting friction. कि बॉडी चले तो सही ना, अगर बॉडी चली हुई नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगी, तो वर्क डन भी जीरो होगी। बट वंस द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन will always be given by the product of the frictional force into the distance. Hope it is clear from this example. मैंने कहा अप्लाइड फोर्स अगर 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 5 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर्स है,
नेट वर्क डन कितना हो गया? नेट वर्क डन हो गया अप्लाइड फोर्स माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स। लॉ ऑफ मोशन 150 जूल, सॉरी हाँ 150 जूल। Had there been no friction, the applied force of 20 newtons would have moved the distance to 10 meters and the work done would have been 200 joules. अरे बाकी के 50 जूल कहाँ गए? फ्रिक्शन का गए। But to determine the work done against friction, we need not know the applied force. We are not interested in finding the net work done. If we are interested in finding the work done against friction only, we will multiply the frictional force into the distance traveled. That's it. Case 2 करते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी ने मूव करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट करो जरा, लेट मी जस्ट अ मिनट। Come back. Let me move the body on an inclined plane and see that how does the work done change as compared to the body moving on a horizontal surface. Case 2. Body moving up an incline. This is a certain angle, not necessarily the angle of repose, not necessarily the angle of repose, as I have to make the body move up the incline. Wait, normal reaction. The angle is going to decide that what the limiting friction is going to be like. I divide into two components. This is mg cos theta and this is mg sin theta. I must apply a force which is enough to not only overcome mg sin theta but also which should be able to overcome the limiting friction here, the limiting friction between the two surfaces. Thus, to move the body up an inclined plane, you must apply a force which is enough to overcome the component of the weight as well as the limiting friction. Now, if I compare it with the minimum force required to move the body on a horizontal surface, that was only the limiting friction. As R is equal to mg cos phi and limiting friction is FMS is equal to mu into R is equal to mu mg cos theta. The minimum force required to move the body up the incline is P is equal to mg sin theta plus FMS. Clearly, we need to overcome the component of, we need to overcome mg sin theta, जो क्या है, the component of the weight acting down the incline.
plus the force of limiting friction. thus दो तरीके का work done lost जाएगा. If you want to accelerate the object, you will have to apply a force which is greater than mg sin theta plus fms. वो kinetic energy बनेगा. If you want to move the body up the incline with uniform speed, so this must be the work done, and this work done is going to be lost. यहाँ आ गया जी ऑब्जेक्ट आपका, and this is the distance covered. Work done is fms plus mg sin theta into s. In this work done is also lost. Please see that even if I apply a force which is greater than the force over here is still being applied, then that work done would be converted into kinetic energy or potential energy also. As we will do the chapter on work, we will come to know that the work done will always get converted into kinetic or potential energies. But over here, this work is just enough. Even if I increase the force to greater than this, the work done to overcome the component of the weight and the limiting friction will remain the same. यहाँ पे दो चीजें आती हैं. Hopefully you understand this, and we call it a day today. Please revise your work. And very few students are showing me their work. Please see that I'm going to call some of you and see that your work is on my phone by tomorrow morning. Bye bye. Have a great day.